गांधी जी का सबका साथ सबका विकास के मिशन को आगे बढ़ाता है। ये बिल देश के उन वंचित मुस्लिम बहनों के लिए लाया जा रहा है जिनके हकों को वोट की मिसमैनेजमेंट या करप्ट प्रैक्टिसेस द्वारा पिछले 75 साल से उनकी अनदेखी की गई है या उनके हक को मारा गया है। मैं वक्फ का मतलब है किसी जमीन या संपत्ति को हमेशा के लिए दान देना, ताकि उसका इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक या चैरिटी के कामों के लिए हो सके। वक्फ बोर्ड इशू एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। Some colleagues in the opposition are trying to create misunderstanding in the country by giving a religious color to an administrative issue. Yesterday during the discussion in the other house as well, and today during the discussion over here, a number of members, especially from the opposition, tried to do the same. They repeatedly described Waqf as a religious issue. However, from the Sachar Committee report to the numerous Supreme Court and High Court judgments, the Waqf Board has been described as an administrative body. और रही बात कानून के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की या जो आरोप लगाए गए हैं कि आर्टिकल 25 या 26 के विरुद्ध है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वक्फ बोर्ड रिलीजियस नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसलिए यहां आर्टिकल 25 या 26 की तो बात ही नहीं खड़ी होती। Sir, the various courts of the country have clearly stated that the management of Waqf and temple properties is not a religious but a secular function. In the Said Fazal case of Kerala High Court, it has been said that the Waqf board is a legal entity, not a representative of the Muslim community. So in the Zafar Ahmad case in Allahabad High Court has ruled that the Mutawallis, the managers of Waqf, does not have ownership rights over the property and that his work is not religious but secular. The Rajasthan High Court has also said that the management of temple property is entirely a secular function. Therefore, objecting to the inclusion of a non-Muslim in the Waqf-related institutions is neither legal or non-constitutional. On the contrary, sir, the current law has several provisions that are unconstitutional, such as the Waqf by user or the absence of a provision for appeal against tribunals' decisions. Both these clauses, inserted after 1995, are against Article 300A, the right to property. So, why are our colleagues in the opposition who always talk about accountability finding fault with this bill, which has been brought with the intention of implementing management, property registration and financial transparency in the Waqf board? Sir, this is hypocritical. Out of the approximately 31,999 cases pending in the Waqf tribunal, more than 10,000 cases are nearly, more than 33% have been filed by the Muslims themselves against these institutions. This is a criticism from within the very community these boards claim to serve, sir. Sir, वक्फ बोर्ड और ऑपोजिशन की कुनीतियों ने मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। पिछड़े मुसलमान भाइयों बहनों को उनके ही समाज के लोगों ने आगे बढ़ने से रोका है। सर, अख्तर निजामी का एक शेर मौजू होता है, वो जहर देता तो सबकी निगाहों में आ जाता, वो जहर देता तो सबकी निगाहों में आ जाता, सो ये किया कि मुझे दवाएं ना दी। सर, ये विषय सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लगभग 9.4 लाख एकड़ की संपत्ति के एफिशिएंट मैनेजमेंट का है, वक्फ बोर्ड की फंक्शनरीज के अकाउंटेबिलिटी का है और वक्फ बोर्ड की आर्बिट्री पावर्स को रेगुलेट करने का, नियमों के अंतर्गत लाने का है। इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। 1913 में जब मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लगाया गया, जिसमें वक्फ की अकाउंटिंग, फाइनेंस आदि तय हुए, सर, I will request, I am an independent, I am a minority in the house, so kindly grant me some time to speak and heard my voice, sir, please. दिल में भी यही है, आपके में नहीं है। क्या कोई भी ये कह सकता है, और मैं ये बात पूरे सदन से पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि आज ये सदन एक ऐतिहासिक पल पे है सर, क्या कोई भी ये कह सकता है कि वक्फ की प्रावधानों का पालन उसके ओरिजिनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से हो रहा है? क्या वक्फ बोर्ड से समाज में अपनी क्रेडिबिलिटी खोई नहीं है? क्या वक्फ की जमीन के रिकॉर्ड और अकाउंटिंग पूरी तरह से पारदर्शी है? क्या वक्फ अपनी जमीनों का पूरा इस्तेमाल अपने समाज के पिछड़े मुसलमान भाई और बहनों की एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड इत्यादि के लिए उपयोग कर रहा है? क्या वक्फ अपनी जमीनों की जितनी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है उसका सिर्फ 2% ही
वक्फ की ने जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा नहीं किया है, या क्या वक्फ की खुद की जमीनों पर कब्जा नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है? सर, इन सभी सवालों का जवाब है उम्मीद बिल, क्योंकि ये उम्मीद बिल ये क्लियर करता है कि हमें किस तरीके से। सर, मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट लूंगा। सर, मैं हरियाणा से आता हूं और हरियाणा के ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। यमुनानगर के एक जटलेना गुरुद्वारा में, जो कि 1947 में जब विभाजन हुआ, तो वो गुरुद्वारा विभाजन के वक्त मस्जिद को अलॉट किया गया। 1967 में उस गुरुद्वारा पे वक्फ ने क्लेम किया और 1967 से लेकर आज तक वो गुरुद्वारा वहीं अटका हुआ है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि ये मामला कोर्ट के अधीन है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके अंदर मैं कोट कर सकता हूं, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से मैं नहीं कोट करूंगा। पर मैं कुछ बातें जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि ये बातें सदन में इतिहास बनाने वाली बातें हैं और कुछ बड़े लोगों ने ये बातें कही है। सरदार पटेल जी की बात मैं कहना चाहता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के दौरान, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट रिलीजियस प्रॉपर्टी सर्व पब्लिक गुड, नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट। The Waqf Amendment Bill 2024 does exactly that, sir. Dr. Rajendra Prasad warned on the mismanagement of the Waqf Act. If religious trusts are not regulated properly, they become dens of corruption, exploitation. कार्तिकेय जी conclude करिए, please. सर, मैं अपनी बात बस conclude करना चाहता हूं सर। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हिस्टोरिकली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर यह तय किया गया है कि रेगुलेशन की जरूरत है और इसको मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। मैं सिर्फ पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर राजनीति ना होए और चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब एक मत से इस बिल का सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती जेबी माथेर हिसम। जेबी जी। Sir, I wish to start by sharing the concerns from my home state Kerala of the people of Munambam, of about 600 families caught up in the legal imbroglio regarding their land and homes where they have been staying since 1950s, and they are in the fight for their justice and their rights. Let me categorically say, my party, Indian National Congress, the UDF, unconditionally support and stand with the people of Munambam in their quest for justice. That land belongs to them and it cannot be bulldozed by anyone. The fact is, Munambam land was purchased for consideration by them with their hard-earned life savings during the year 1989 to 1993. The fact is, they have valid title deeds since then. The fact is, they purchased it from Farooq College Trust. It is also a fact that Farooq College validates the land is sold by them. It is also a fact that, taking responsibility, Farooq College has approached the Waqf Tribunal and filed appeal challenging the 2019 Waqf Board decision, which was made under pressure of the contempt order notifying Munambam land as Waqf, and it is pending before the tribunal. It is clear the seller stands with the purchasers. It is a sad fact that revenue rights have been denied to them since 2022. Those who are living in Munambam are the sons and daughters of the soil of Munambam. മുനമ്പത്തെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്, മണ്ണിന്റെ മക്കളാണ്, കടലിന്റെ മക്കളാണ്. അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കണം. And in their fight for justice, I reiterate, we sincerely stand with the people of Munambam unconditionally, and no one can evict them and no one will be evicted. The political parties, the churches, the KCBC, the CBCI, the Muslim organizations and several organizations, all of us stand with the people of Munambam. Sir, that being so, unfortunately, in the backdrop of this situation, one party is trying to create clear divide among minorities in Kerala. The same party who closed their eyes against the attacks on Christians in Manipur, in Jabalpur and elsewhere in the country. Let me assertively say, those who are trying to spread the venomous cocktail mix in Kerala of communal polarization, they will not succeed. This is the land where on a Friday afternoon, when temple gate of Tali temple in Angadipuram, Malappuram was burned by some social miscreants,
There was total panic. Panakkad Muhammad Ali Shihab Tangal, after his Juma prayers, and thereafter send the money with Sadiq Ali Shihab Tangal, Sadiq Ali Tangalji to the temple for the reconstruction of Temple Gate. This is Kerala and India. Sir, it is a land where the Hindu reformers, NSS, SNDP, Christian missionaries, churches, Latin Catholics, Orthodox, Jacobites, Marthoma, CSI, MES, Muslim Education Society, and others have greatest contribution in creating a social secular fabric. The contribution of Christian congregation in health and education front is countless. None of them, while doing this immense service, has never looked at the name, the caste, the religion. This is Kerala and India. Sir, it is a land where 3 days back in Kozhikode, went to celebrate Eid, the school ground which was given to the Palliyarakkal Durga Bhagavati temple for their festival, and only after festival started, moon was seen, and immediately the Durga Bhagavati temple committee made all arrangements for the Eidgah. This is Kerala and India, and that we celebrated, sir, that we celebrate. So, even if BJP makes an attempt to spread the venomous cocktail mix of communal polarization, Munambam will not act as a catalyst. Now, sir, let me move on to the bill. Bill is not just a threat to the secular fabric, but an attack on the very heart of our Constitution, especially Article 26, which guarantees right to freedom of religion. It is a matter of principles of religious freedom, of fairness, and of constitutional integrity. This is a bill intended to take away the rights of a minority community. So today, government is targeting the rights of Muslims. Tomorrow, it could be again